Assalamualaikum viewers. Today we are going to talk about our semester project that is basically a line follower robot. जैसा कि हम सबको पता है लाइन फॉलोअर एक सिंपल रोबोट होता है जो ब्लैक एंड वाइट लाइन को फॉलो करता है और उसे जो भी पार्ट्स प्रोवाइड होते हैं उनमें से शॉर्टेस्ट पार्ट को अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स इंटेलिजेंस. इट कैन बी अ रैंडम पार्ट बट द अमेजिंग थिंग इज़ अगर हम उसके साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करें तो अपने रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल होते हैं इनको अवॉइड करता है. और ये लाइन फॉलो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ आई आर सेंसर्स that is basically infrared sensors. So this is basically our project report of the robot, and today we are going to discuss about it. So first of all, there is chapter 1, and in chapter 1 we will discuss that हमने अपने जो रोबोट है लाइन फॉलोअर उसे मूव करने से पहले एक टर्टल रोबोट डिज़ाइन किया था. बेसिकली टर्टल रोबोट इज़ सिमिलर टू लाइन फॉलोअर रोबोट, बट ये क्या करता है कि एक सिंपल जो ब्लैक लाइन होती है उसे फॉलो करता है. एंड ये टर्टल रोबोट हमने बनाया था एट प्रोटियस विच वी यूज्ड प्रोटियस 8 प्रोफेशनल. एंड देन ये हमारे पास जो हमारा लाइन फॉलोअर रोबोट है इसका स्कीमेटिक है. एंड वी हैव यूज्ड as you can see we have used 3 IR sensors here, but in our project that we designed physically we used an array of 5 sensors. The above is motor driver IC. देन हम देख सकते हैं नीचे Arduino मेगा यूज़ हुआ है, LCD डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक, वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, एंड वी हैव यूज डिफरेंट सेंसर. एंड दिस इज आवर स्पेसिफिकेशंस. Then there is team role and details. हम basically 4 group members थे. One was the team lead, other was uh, busy with the hardware handling and sensor interfacing. Then I was busy with project assembly, schematic, PCB designing, like. And then Muhammad Salwan was our fourth member, and he was with sensor interfacing and programming. So here is the breakdown structure basically, as you can see. एंड इट इज़ Gantt chart एंड एस्टिमेटेड बजट, लाइक कितना बजट होगा, एंड हमारा जो वर्क ब्रेकडाउन है उसका चार्ट, लाइक दिस थिंग्स. So chapter 2 is basically about introduction of line follower robot. के line follower robot basically होता क्या है? As I discussed above के हमारे पास एक जो पार्ट को फॉलो करता है, ब्लैक एंड वाइट लाइन को फॉलो करता है, एंड लाइक दीज थिंग्स जो भी हैं. देन हमारे पास लिस्ट ऑफ फीचर्स आ जाती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एंड these are the most important in components. We have used Arduino Nano, one Wi-Fi module, 10 LCD interfacing, 12C basically. 16:12 हमारे पास हमने LCD मॉड्यूल यूज़ किया था, एंड 12C हमारे पास बेसिकली कन्वर्टर होता है सो डैट हम उसकी पिंस को कम कर सकें. Then a sticker module, IR sensor, ultrasonic sensors, encoders, voltage sensor, current sensors, of course robot chassis. Then we have used 2x motors. Basically we use or TCC motors, jumper wires, header pins, like all these things. And these are the product development processes, and this is the most important in block diagram, and this was the basic block diagram. So we have used Arduino Nano, and as we all know that इसकी पिंस बहुत कम होती हैं, so that's why we have used the Wi-Fi module ESP32. एंड उसके साथ बेसिकली हमने डिस्प्ले, वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर अटैच किए थे. एंड we have used motor driver, and we connected it on A6 A7 ports. As we all know that कि हमारे पास वो basically pins होती हैं या एनालॉग पिंस, एंड हमने एनकोडर्स को अटैच किया एनालॉग पिंस पे, अल्ट्रासोनिक के एनालॉग पिंस पे, आई आर रेशिगान. एंड हम आगे जाके इसके और ब्रेकडाउन देखेंगे कि किस तरह से इसकी पिंस होती हैं एंड इसके कनेक्शंस, लाइक दैट थिंग्स. So here is our first sensor, that is basically ultrasonic sensor. As we all know that कि ultrasonic की 4 pins होती हैं, VCC, ट्रिगर, echo and ground. So VCC एंड ग्राउंड को तो हम सिंपली जो रोबोट की पावर है इसके साथ अटैच करते हैं.
वाल जो हमारे पास ट्रिगर एंड एको है, इसको हम बेसिकली उसकी पल्स के साथ अटैच करते हैं, सो डैट हम उसकी जो है ना मीन्स के जो भी ऑब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट कर सके। अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम ही बेसिकली होता है कि ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है एंड जो है उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो वापस आर्डिनो को भेजते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसका पार्ट जो है ना चेंज होता है। सो सेकंड इज़ आर्डिनो नैनो ऑफ कोर्स। हम जानते हैं कि आर्डिनो नैनो हमारे पास आर्डिनो कंपनी का एक डिवाइस है जस्ट लाइक 8 मेगा 3 to 8 P या अदरवाइज 8 मेगा लाइक दीज थिंग्स। आर्डिनो नैनो भी हमारे पास उसी की एक टाइप है, बट इसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास सपोर्ट बहुत कम होती है। सो दीज आर दी रोबोट चेसिस जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास टायर्स आ जाते हैं, टीटीसी मोटर्स आ जाती हैं, लाइक दिस थिंग्स। So this is basically the main sensor of line follow robot, that is basically IR sensor। अब IR सेंसर का काम क्या होता है? ऑफ कोर्स ये हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि बेसिकली ब्लैक या और वाइट लाइंस को डिटेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटरफेसिंग लाइक कोडिंग। Let's read about it। An IR sensor is a module, an IR transmitter or IR LED that send an infrared signal or create certain frequency and blah blah blah। So then it's come the motor driver। We have used LN29। सो मोटर ड्राइवर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके अंदर बेसिकली हम 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड ग्राउंड। और द अमेजिंग थिंग इज इट आल्सो एक्ट एज इट आल्सो एक्ट लाइक जो कि वोल्टेज को ड्रॉप आउट करता है बिकॉज हम इसे 12 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं एंड 5 वोल्ट को ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। सो next is TT gear motor as I have discussed above and encoder। then that is the basically SD card module। SD card module हमारे पास मार्केट में 2 टाइप्स के होते हैं। एक SD कार्ड हमारे पास रीड मॉड्यूल होता है और एक सिंपल SD कार्ड मॉड्यूल होता है। SD कार्ड रीड होता है वो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है एंड उससे जो है मतलब हम दोबारा उसे मतलब कि देख सकते हैं। बट जो नॉर्मल एसडी कार्ड होता है वो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होता है उसे राइट भी कर सकते हैं और उसे जो है ना वाईफाई के ऊपर बेसिकली ट्रांसमिट कर सकता है। सो हम उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ दी 12x2 LCD डिस्प्ले। अब 12x2 का मतलब क्या होता है? आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, आई मीन टू से नीचे पिक में देख सकते हैं, बेसिकली इसकी 2 रोज़ होती है। सो हम 16 क्लास 1 यूज़ लेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन उस तरह से प्रोवाइड नहीं होगी, बट अगर 16 क्लास 2 लें तो हमारे पास ये जो है ना कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड राइट साइड पे हमारे पास बेसिकली 12C है। एंड आई एज आई हैव डिस्कस्ड अबव के बेसिकली ये हमारे पास पिंस को कम करने के लिए यूज़ होता है। सो एलसीडी की सारी पिंस इसके ऊपर आ जाएंगी एंड इसकी 4 पिंस होती हैं और इसी से ग्राउंड एंड 2 इसकी जो है एलसीडी के लिए पिंस होती हैं एंड these are the pins of it। then we have used AICS712 that is basically a current sensor। अब इसको जब हम आउटसाइड वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो हमें बेसिकली ये बता देगा कि उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है और डिपेंड्स अपॉन कोडिंग ही हमें बता देगा कि हमारे पास जो आर्डिनो से आ रहा है करंट उसकी क्या वैल्यू है। बिकॉज अगर हमारे पास ज़्यादा करंट रन होगा तो हमारे पास रोबोट हमारा बर्न भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वोल्टेज तो वो 5 वोल्ट ही होगी, बट जो हम उसके अंदर करंट यूज़ करेंगे वो 7500 मिली एम्पेयर्स या इससे ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें जो है रोबोट को चलाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। देन और देर इज़ कम पोटेंशियोमीटर। बेसिकली हमारे पास ये एक रोटेटरी एनकोडर यूज़ होता है। so we can either use it as an encoder or we can use a simple button like that। सो देयर आर सम लिंक्स ऑफ गिटहब के किस तरह से जो है बेसिकली लाइन फॉलोअर को इंटरफेस करना है एंड लाइक दैट। सो देयर कम चैप्टर 3 दैट इज बेसिकली अ मैकेनिकल डिज़ाइन। ओके, सो मैकेनिकल डिज़ाइन में ऑफ कोर्स हमारे पास सबसे पहले इसकी रोबोट की चेसिस आ जाएंगी जो कि एज वी कैन सी के किस तरह की
साइलिक की बनी हुई है, देन इसके अंदर रबर के टायर्स एंड लाइक दैट थिंग्स. एंड हेयर कम्स अवर चैप्टर 4 दैट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. इसके अंदर हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे एंड लाइक दैट थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स हमने एटमेगा यूज़ किया है. सो एटमेगा 382P एंड उसके सम पैरामीटर्स लाइक देयर प्रोग्राम मेमोरी टाइप फ्लैश होती है, प्रोग्राम मेमोरी साइज दैट इज़ 32 KB, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट Arduino Nano, नॉट जनरल Arduinos. सो Arduino Nano की CPU स्पीड अगर हम देखें 16 MHz. ऑफ कोर्स इसके अंदर 16 MHz का क्रिस्टल होता है. देन SRAM इज़ 2 KB, basically static RAM. Then data from bytes 1 KB, and we all know that 1 KB के अंदर 1024 bytes होते हैं. Then its communication peripherals USART SPI 12C and like other these parameters. So what are the advantage of using Arduino Nano and its disadvantage? Of course, its advantage are its compact size, cost efficient, versatile iOS, and its compatibility, of course. And of its disadvantage is limited processing power, is limited memory, and fewer peripherals. And these are the general Atmega devices and their parameters. सो लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट मशीन की. स्टार्ट मशीन में ऑफ कोर्स वी हैव 4 पोजीशंस, स्टॉप, फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट. ऑफ कोर्स इट्स अ लाइन फॉलो रोबोट. सामने इसमें रिवर्स हैंड का कोई कोड नहीं डाला, सो रोबोट मूव रिवर्स हैंड, इट ओनली मूव्स फॉरवर्ड. सो स्टेट मशीन and it's the state table of a robot. Of course, the code. First of all, is the ESP32. Then current sensor, coding, voltage sensor, color sensor. Of course, we have used color sensor. So color sensor का काम बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास जो रेड, ग्रीन या ब्लू से आगे डिफरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे उनको डिटेक्ट करेगा. अल्ट्रासोनिक और इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली. ओके, सो अल्ट्रासोनिक में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसे डिटेक्ट करके ये आगे मूव कर देता है. बट ऑफ कोर्स जब हम इसके आगे कोई जब भी हमने कोडिंग के लिए कलर्स यूज़ किए उस कलर्स की कोई चीज़ रखेंगे तो हमारा रोबोट उस टाइम पे फ़ौरन स्टॉप हो जाएगा. सो इट्स Arduino Nano कोडिंग, it's motor coding, ultrasonic sensor coding, and this is our schematic, PCB of schematic. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस बात पे कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास जो स्कीमेटिक है उसी का पीसीबी होता है. बट ऐसा नहीं होता. एक हमारे पास जनरल स्कीमेटिक होता है एंड एक हमारे पास पीसीबी का स्कीमेटिक होता है. अब पीसीबी का हमारे पास जो जनरल स्कीमेटिक होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, सो वो हमारे पास इस टाइप का होता है जिसके अंदर हम जनरल जो है ना उसके कनेक्शंस एंड उसके अंदर कोडिंग ऑफ कोर्स देखते हैं. बट जो हमारे पास पीसीबी का होता है उसके अंदर बेसिकली हम जो है ना हमारे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल स्कीमेटिक के अंदर कुछ पीसीबी के कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो हम उसकी जगह पे जो है ना मीन्स के करते हैं. ऑफ कोर्स कनेक्शन को लो करने के लिए हम जो है ना मीन्स के बबल यूज़ करते हैं. बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है जो कि हमारे पास इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स को बताता है एंड ये हमारे पास एज अ वॉइड एक्ट करते हैं. एंड इट्स आर of course PCB, and we have used bottom copper and top copper. And final testing के अंदर हमारे पास different stages थे. We have discussed and things questions, and this is our basically hardware picks कि किस तरह से हमारा रोबोट था. चैप्टर 7 इज़ आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इसके अंदर बेसिकली हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स रेफरेंसेस दैट आर द मस्ट. इफ़ यू वांट यू कैन चेक दीज लिंक्स. एंड हमारे पास बहुत अच्छी वेबसाइट है इंस्ट्रक्टेबल्स. एंड इंस्ट्रक्टेबल्स के अंदर हमें लाइन फॉलो का बताया हुआ है एंड इट वाज द बेस्ट लिंक आई हैव एवर फाउंड. So that was a short description of our line follower project basically. Have a good time until our next video come.